Dun, da, da, dun, da, da. Count the number of special character 2. You're given a word or letter C contain a C called a special. It appears both on the lowercase and uppercase word, and every lowercase occurrence of C appears before the first uppercase of lower word. I have to count the number of characters that are in the lowercase and appear before the first uppercase. First thing we can do is let's make it a set. Does my A appears before the uppercase? Yes, true 1. Does my B appears before the uppercase? Yes, true 1. Does my C appears before the uppercase? C, yes, true. Then 3, first one. And for the ABC, we don't have any uppercase, 0. For this thing, but here my B occurs after B, right? Then it should be 1, right? How? And and for A, we can't count since A occurs after the uppercase. But my B is in the lowercase and other B is in the uppercase, right? So this should be counted, right? Every lowercase occurrence of C must appear first occurrence of C before the first occurrence. Every lowercase. Okay, we need a hashback. Use a 2-pointer here. अच्छा ओके सेट को मेरे को क्रिएट करना 2 for loop.
First pointer will be here and second pointer will be here. Can I just sort this thing? If I sort, then this didn't work, right? If I sort, then order will get mixed up, right? Sorting is not the answer here. What can I do is like I'll take the first pointer, second pointer. Is my first pointer lowercase and my second pointer is uppercase, and even the character is matching, then I will count it as one. What do you guys say, man? Oh shit, two pointer won't work. Since here you have A and A you have here like in the next index, so this will work. But for the B it will fail since my B is first pointer and C will be my second pointer. So this will not work, man. I have to do includes again like yesterday. What am I studying? Uh, Currently doing MCA. MCA, like, do you know MCA? I don't know. Like, if you're from foreign, then I don't think you know MCA. I don't think people from other country might be doing MCA. I have never seen some person. I never really met someone who is doing MCA in their life. Most of the Indian people only does the MCA thing. This is they're from Nepal. I have been to the Nepal, man. Durga temple. They have a famous Durga temple right on the mountain there. I've been there. I will show you the images after I mean, at the end of the stream. I think you might be there. I mean, so what does my question says? You are given a word and a letter C called as special. If it appears both on the lowercase and uppercase in the word, and my lowercase occurrence of C appears before the first uppercase occurrence of C. So my lowercase should appear before my uppercase, then it's a valid special, I guess, called as special. Then return a number of special letters in the word. Okay. How do we do this now? I have removed the duplicate now. We don't have any duplicates right now. Now what is our job now? The two pointer won't work here, I guess. I have made it a set, so we will be having this one, this one, this one, this one, and this one. So what are the things you will have? A, B, C, B, and C. Imagine if I have my first pointer here, P1 and P2 here. I think I can do it in a n square, I guess.
Let me not think about the optimized way, but let's brute force for now. Later we can come to the optimized path. So this will be my new word, right? The for loop will go from I till new word dot length. What I did is like I took a set and stored the word in the set, and I've created a new word to iterate over it. If my I start with 0, then from where my j will start? J. Should my j start with 0 or 1 or I plus 1? J should go till end of the new word, then j plus plus. Now we have to do a comparison thing here. If lowercase wala set, the lowercase in the next part of my new word, and my I is less than j, then I will increment my count. Let me try. I don't know if this will work or not, but I'm trying to brute force. If you brute force this, now how do we do this now? I have a new word and I have a I and I have a j. Now I have to, since a lower is already lower, let me take, should I do P1 and P2, or can I just take, let me put them in a variable, man, it will be easy for us. This will give me all the if my first pointer equals to second pointer dot to lowercase, since it's already in uppercase, and my I is less than j, then I will increment my count. Do I have to put an else condition here? Whenever my first pointer, which is new word of I, equals to my second pointer at lowercase, since the second pointer can contain. Wait a minute. Even my second pointer will point to the same thing what my first pointer is pointing. So, will this shit work? Now what will happen is like, if my first pointer is A, and my second pointer will become A again, which is I plus 1 this one. Okay, I think this should work now. If it is getting failed, then we can see like what we can do for this thing. It says undefined, right? Didn't I create a variable? Is it two lowercase? सही तो दिया bro. What the fuck? Did it go beyond my length right now? Less than my
Ah, shit. Damn. What are we doing here? If my eye is not greater than j, if my eye point is not greater than my j, and on my first pointer at second, if this is true, then only you go inside. Otherwise, you don't go. If my eye pointer is should be less than j, right? Should be less than my j. Then only you do this thing. Otherwise, my count will stay zero, right? Oh, oh. What is the issue now? Two pointer works, man, but we have to see the indexes and everything properly. But यहाँ पे क्या issue हो गया इसको? How my A is here. I think B wala got succeeded, man. B wala part got succeeded. Look at this. My lowercase b is here and uppercase b is here. So this one got true pair, so it got paired up. Baki sab is not matching, so we didn't get their counts. For other thing, it worked fine, I guess. Brute force काम नहीं करेगा, but still 2 to the power of 10 to the 2 into 10 to the power of 5. This is a pretty bigger number, I guess. वैसे इसमें काम कैसे करवाएंगे फिर? How do I ignore this now? Shade draw. Anyone has an idea like how can we ignore the last check? मैं last test case का कुछ issue है. Since it is coming in middle, we can't ignore that. Should I just skip it? मेरा first point, whenever my I is less than j, and क्या इशू है यार इसमें? First pointer equals to my second pointer at lowercase, then only counter, and I is less than my j. और क्या अप्रोच लगा सकते हैं? मैंने क्या किया कि I use 2 for loop. First will start from here, and second will start from I plus 1 whatever is there. Then here it will check is my this thing is equals to this thing. Yeah, the lowercase is equals to the a dot 2 lowercase. So this also becomes a. So these both are true. Then one count, and it will come here again, and this will be my first pointer now, and this will be my second pointer now. Is this true? No. Then it will move to the next pointer.
Then we check B and B is equal. So the count will be 2 now. How did the C got counted then? Oh, what the hell? I did I plus 1 and my J is less than till new word dot length. But my C got skipped right here. Since it will compare my B with the C, let me clear this so you can see. This B will get compared to this thing which is not equal, and it will get skipped, I guess. And it should be now this thing and this thing which is not equal again, it will get skipped. And it will be next and this thing, this will get skipped. But how the fuck I got a 3 here then? Didn't I remove them? I have removed everything. Will my set mess up with these things? I think set will mess up everything. Set is messing with the organization of the characters, I guess. Since the order is getting changed, we're not able to get the proper answer. How to fix this? Try map. In map, how do I do this now? If I have a map, if I have a map, then what would I do? Let me see. Let me try once. If I have a map, then how would I put it? If I have a map, then I can. Oh, if I have a map, I can put the index like 0 and A and 1 A and C is what the fuck is C? C is 2 C and B will be like 3 B and this will be like 4 C. Now what we can do is like check compare the index and if my value is equal to this, yeah. But how do we ignore the last test case, bro? This test case is fucking crazy. If I use a map here, look at this. If I use a map here, then how would you do that? I have a map. This will be my 0 of A, which is first index and first value. This will be my 1B. This will be my 2B. Now this will get validated, so our count will become 1. And this will fail, this will fail, this will fail, this will fail, everything will fail since this is coming before this thing. And even this B will get ignored since if we are using set, then this B will get ignored or this B will get ignored. Any one B will get ignored, I guess. If I don't use a set, then my B will be 2. First index will be like B 1 and B 0, 1, 2, 3, 4, 5, B 5. From here what I can see is that if my capital B lies before this, then I consider this B alone, not this B. So if we use a hash map without duplicates, then how would we do this? This will be 0 of A, 1 of A, 2 of A, 3 of B, 4 of C, 5 of capital B, 6 of small c. यहाँ पे how will we do this? Store one index of uppercase and last index of lowercase. Eh? What the heck is this? Store one index of uppercase and last index of lowercase in the map. Store one uppercase, cancel
uppercase, cancel, cancel, uppercase. How would you store the lowercase then? Did I do it wrong? Should I store my lowercase first and then look for uppercase? Am I audible or not, man? Like, I don't know. Am I clearly audible for you guys? This is fucking twisted question. The last test case is fucking crazy. Driving me nuts right now. What the heck is this symbol, bro? Am I audible support or not, myself? Man? Like, I don't know. Am I clearly audible for you guys? Chicken rice சாப்பிடுறியா? So we have every index here. Do I need to store only the lowercase and uppercase alone here? Bro, this is fucking crazy, bro. I think I didn't understand your approach, Mr. Shanmachan. First, we'll have a map, right? Let me take a map first. Let map will be like new map. And we'll store a lowercase first. Should I create a set then? Do we really need a set? Or the last occurrence is enough? If I store the uppercase, then I have to do double iterations, right? To check if my uppercase is existing, then I will add. यहाँ पे now we'll iterate till the end of the array, right? Normal iteration is fancy here. What is the third dot? I haven't habit inside that, otherwise. तो rejects ही डाल दूंगा डायरेक्ट. डायरेक्ट रिजेक्ट ही डाल देते हैं जैसे कल किया था. How did I put a reject? Oh, this. ऐसे क्या था क्या? हाँ bro, this is wrong. हाँ ऐसे किया था. ए से जेड तक टेस्ट करेंगे एंड मैं करंट कैरेक्टर लेट करें. टेस्ट हुआ करंट कैरेक्टर. तो भाई साहब ये लोअर में जाएगा. जैसे हम लोग ने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, कैरेक्टर यहाँ पर डालें या फिर इंडेक्स यहाँ पर डालें फर्क नहीं पड़ता. दोनों तो सेम ही लग रहा है. कल वाला ही है ये. I'm writing rejects, bro. Rejects. How do I say rejects this thing? Regular expression. अगर ये नहीं है तो फिर विल स्टोर दी अपर केस वाला में अपर केस का डालेंगे. कैरेक्टर भाई, कार नहीं भाई. अब दो लूप तो लगेगा नहीं. अभी हमने कंपैरिजन करना है, छोटा है या फिर वो है क्या. कल जो किया था वैसे ही करना है. कैसे किया था? फॉर कॉन्स्ट ऑफ वैल्यू रही. How do you take an index also?
for of loop with index const same let the const से फर्क नहीं पड़ता क्या क्या ले रहे हैं हम अपर केस एन स्पेलिंग इनका थोड़ा टी छोटा लंबा बड़ा हो जाता है फिर मार लेता इफ माई अपर केस अगर अपर केस में है अपर केस या लोअर केस कुछ भी है एस अपर तो काउंट बनाने का पर अपना फिर काउंट तो जीरो ही रहेगा रिजेक्ट वाला काम करेगा नहीं करेगा ये पता नहीं ये जो बोला था वही तो है ऊपर वाला भी अपर केस इज नॉट डिफाइंड कैपिटल सी को पक्का हो गया अपर केस अपर लोअर केस अपर केस टेस्ट एंड ये भी सही है ये भी कैपिटल ए से कैपिटल जेड का कितना टाइम नहीं किया काउंट अरे भाई लास्ट वन क्यों नहीं हो रहा भाई दोनों मेथड में लास्ट वन पटक गया चित्रे उड़ गया भाई लास्ट वाले का हमेशा भाई लास्ट वाला का कैसे मतलब स्किप करूं यार व्हाट द फक भाई मैंने वहां पे डबल लूप लगा था उसमें भी वही हुआ इसमें भी यही हो रहा है क्या दो दो अपर भी आ सकते हैं क्या एक ही आएगा ना यूनिक ही रहेगा ना क्या इशू हो गया लास्ट टेस्ट केस फिर से डिबग करने पड़ेंगे ब्रो मेरा ब्रूट फोर्स में भी लास्ट केस गया एंड इसमें भी लास्ट केस जा रहा भाई सेल कोड ये है डिबग करेंगे लेट्स गो क्या कर रहे हैं लोअर केस का सेट अच्छी लोअर केस का मैप बना अपर केस का मैप बना काउंट है नॉर्मल आइट्रेशन टेकिंग ईच वर्ड मतलब ईच कैरेक्टर and this is for checking if my character is under a comma z which is lower a comma z I mean lower a to z sorry a to z not a comma and test is used for checking if this character is this thing or not and if it is there then we are setting the lower map with value like first character imagine if this character is here so we'll put a and 1 0 1 2 3 4 and it will be like 4 like this it will get stored and here we are checking otherwise if it is bigger character then we will take this and for the uppercase same thing will happen like this and the index will be like upper a and 0th index and again this is for iteration purpose and there is like character and index and this is called as destructuring in JavaScript
I don't know, but are they are supposed to have the destructuring array, but I think this is some sort of looping statement, but I'm not fond of this thing. But yeah, I will learn sooner. So we have a character, and also we have the index here. Okay, we haven't used the index here. Why? Haven't even used the index here. Then why do we even need an index here? I should be using the index somewhere. Yeah, I think I need a comparison here, man. I missed it something. I took an index. The previous diagram, oh fuck, I deleted it. I think same, this condition is missing. ये वाला. This one is missing, I guess. अगर उससे छोटा है, then only you go, otherwise you don't go. Something like that. इंडेक्स मेरा छोटा होना चाहिए. किससे छोटा होना चाहिए? छोटा ऐसा होता है ना. The fuck भाई, क्या हो गया? छोटा is like this. छोटा किससे होगा? अपर से होगा. अपर में क्या करेंगे? गेट करेंगे. किसका गेट करेंगे? करंट इंडेक्स को गेट करेंगे. इंडेक्स गेट करने पे आ जाएंगे शायद. मेरा ये कंडीशन में से इसीलिए नहीं आ रहा है. मैंने इंडेक्स यूज़ किया ही नहीं. इंडेक्स डिफाइन किया बट इंडेक्स यूज़ किया ही नहीं मैंने. यहाँ पे इट वाज मिसिंग ब्रो. इंडेक्स शुड बी लेस देन माइन. इससे लेस देन होना चाहिए. अपर केस में से गेट करेंगे. किसका गेट करेंगे? करंट इंडेक्स को, अपर को. तभी ये काम करेगा, नहीं करेगा. इसकी माँ की भाई रॉन्ग. इतने सारे पास हो गए. इसको क्या हो गया? तो सी आएगा. सी चेक करेगा. लोअर है, लोअर में जाएगा. लोअर मैप विल भी, तो लोअर एंड अपर मैप बना ही लेते हैं. लोअर मैप सी आएगा पहले. मान लो सी का वैल्यू दे रहा. फिर अज्यूम मैं मान लो कुछ भी ऐसे बना रहा हूँ. फिर अज्यूम अरे जैसे बना रहा हूँ. एंड नाउ इट विल बी सी का टर्न. जैसे सी आएगा वन एंड मतलब सी एंड वन. अरे इसको छोड़ो यार. ये तो इंडेक्स का डिफरेंस हो. तो उसके बाद क्या वापस सी आएगा. सी आएगा तो क्या आएगा? सी माइनस 3 हो जाएगा. सी अगेन 3 हो जाएगा. अगर मैं इसको वापस देखूंगा तो आई नीड टू अपडेट द सेम. मतलब इसको रिप्लेस करवाना है ना. ये नहीं कि मतलब इसको भी रखूं एंड इसको भी रखूं. वी नीड द लेटेस्ट वन राइट. अगर मेरा अगर हो गया व्हाट हैपेंड. ओ इसको डालता हूँ, देखता हूँ. भैंस की.
17% है, व्हाट द फक। ऑप्टिमाइज्ड है ना ये, इससे भी ज़्यादा क्या ऑप्टिमाइज कर। इसको फर्स्ट में क्यों डाला उसने? मैंने रिजेक्ट यूज किया, तूने यूज किया है, इसमें क्या है भाई? ये क्या है? अच्छा तो मतलब कैरेक्टर चेक करने के लिए इतना खत कर दिया, खत कर दिया, क्या समझ, सब वही कर रहा है, क्या समझ, सब वही कर रहा है। ये क्या है भाई, नया मेथड, वाओ। सबको माइनस वन फिल किया, सबको इन्फिनिट फिल किया, डैम ब्रो, दिस अप्रोच इज क्रेजी। इसको थोड़ा डिबग करते हैं, डिबग मतलब स्टडी करते हैं इसको। इतना बड़ा हो रहा है, नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं, हाँ फिर बात नहीं, इसको बढ़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखता हूँ। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट analyzing the code. Lower, last lower, wow, the name is crazy, last lower, मैंने lower किस लिया था? फिर को naming convention पर काम करना। 26 times he filled to -1, 26 times. Imagine I filled it 26 times. 26 alphabets, I guess. And first upper भी इसने infinity को मतलब 26 times fill किया। उसके बाद what he did, he iterated on the word length, normal iteration, and he took each 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 character, okay, and he compared if that is smaller a जो कैरेक्टर होता है ना, क्या उससे बड़ा है, एंड क्या जेड से छोटा है, ये जेड से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, एंड ये से छोटा कोई हो ही नहीं सकता स्मॉलर में, दिस विल वर्क। उसका इंडेक्स दिया इसने, सी हैज डॉट कैर कोड, अच्छा उसका इंडेक्स निकाला इसने, इंडेक्स निकाला, कैर कोड ये डालेंगे ना तो इट विल गिव द कैरेक्टर कोड ऑफ द करंट वॉट एवर वैल्यू यहाँ पे जो है ना इसका सी एच का, उसका यू विल गेट द वैल्यू -97, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्मॉल ए को नहीं, हाँ स्मॉल ए का 97 है, 95 या 95 97, हाँ अगर प्लस कर दोगे तो यू विल गेट वो कैपिटल ए, बट इफ यू माइनस देन यू विल गेट एन स्मॉलर ए। इधर क्या भाई, वो इतना समझ में आ गया मेरे को। तो उसने क्या किया, लास्ट लोअर का इंडेक्स जो भी है तो उसमें आई को इसने रिप्लेस कर दिया, बट वाई ही डिड आई, इसके पास तो आई डी एक्स था, लास्ट लोअर के आईडी जो भी इंडेक्स था उसमें इसने आई को क्यों डाला, इसमें तो उसको वैल्यू डालना था, एंड आई डी एक्स अगेन ही टुक, अगेन इसको करने से विल गेट द अपर केस ए से लेके जेड तक, इफ माई अपर केस ऑल इक्वल टू इन्फिनिटी देन इज अपडेटिंग। अच्छा यही वाला हमारा मिस हुआ था ना लास्ट में, कि हम लोग मतलब चेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड किधर गया, चेक किया कि अपर केस है क्या पहले ये कैरेक्टर, अगर नहीं है नॉट ऑफ, नॉट मीन्स अगर नहीं है तभी डालना वरना मत डालिए। तो उसने भी यही किया है, अगर इन्फिनिटी है तभी ये अपडेट करिए वरना मत करिए बोल रहा है। एंड उसके बाद नॉर्मल आइट्रेशन कर दिया, 26 तक ये आइट्रेट किया, एंड लास्ट लोअर विल बी लाइक if my last lower is not equals to -1 which is last index of the lower case, so
hash map also has a last index -1. Damn, I didn't know this shit. मैं फर्स्ट अगर इन्फिनिटी नहीं है एंड लास्ट लोअर अपर से कम है तभी काउंट बढ़ाना है. इतने सारे कंडीशन डालने के बाद ही इज डूइंग काउंट एंड बट दिस पार्ट इज लिटरली नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर मी राइट नाउ. क्यों लास्ट लोअर में आईडीएफ निकाला था इसने. आईडीएफ निकाल के व्हाई डिड ही स्टोर द आई हियर सिंस वी हैड अ -1. उसकी वजह से आई स्टोर करके उसका वैल्यू चेंज कर रहा है क्या. 0 मतलब 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1. समथिंग लाइक दिस. जीपीटी पे ऐसा पूछते हैं ब्रो. जितना अपना लिखेंगे उतना बाकियों का भी पढ़ना पड़ता है, तभी कुछ आइडिया आता है. बाद में आएगा कुछ. क्योंकि कल क्या आएगा पता है. लेट मी से यू. कल यहाँ पे 3 करके आएगा. फिर आफ्टर नेक्स्ट डे यू विल गेट 4. आफ्टर नेक्स्ट डे विल गेट 5. आफ्टर नेक्स्ट डे विल गेट 6. उसके बाद ये मंथ एंड हो जाएगा. मंथ एंड होने के बाद में यू विल गेट अ डिफरेंट टॉपिक. देन आई थिंक ये स्ट्रिंग वाला चल रहा है अभी. लास्ट लोअर इंडेक्स इज लेस देन माई फर्स्ट अपर इंडेक्स. हाँ ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. अगर है तभी देन इट इज स्पेशल, अदरवाइज नहीं है. अच्छा मैं आप समझा. मैं इसका हैश में मान रहा था इतना इतफाक ब्रो. दिस वाज लाइक अरे मेरा आंसर और इसका आंसर में कंफ्यूज हो गया. इसका सोच रहा है इंडेक्स कैसे निकाल रहा है. इसमें तो हैश आना चाहिए, गेट आना, गेट करके उसमें से आईडीएफ निकालना पड़ता है. स्टोर वैल्यू यहाँ पे है एंड फ्री. ओके मैं आप समझा. जो लास्ट वैल्यू आ रहा है उसका करंट डाल रहा है डायरेक्ट आई गेस. जिसमें वैल्यू आ जाएगा इट विल चेंज फ्रॉम -1 टू द इंडेक्स. तो बाद में यू विल आइटरेट थ्रू दैट एंड चेक इफ दैट इज इक्वल और नॉट. दिस इज फकिंग जीनियस. व्हाट द फक दिस गाइस एबल टू थिंक लाइक दिस. Oh, what the heck is this, bro? Same thing, but ज़्यादा ही है. Word index of will return me the index of you. Shit, last index crazy. सारे functions यूज कर डाले भाई इसने. This is normal one. How do you find a best solution? Will it be the first one? And let me ask why this solution didn't work. Last वाला का success क्यों? प्रीटी क्लोजर बोल रहा है ये. इधर बोला था, अभी तो बोला है. ओके रिजेक्ट्स का टेस्टिंग किया ही नहीं था. होली शिट ब्रो. बस एक कंडीशन डालना था यार. ये सारे सेम है आई थिंक. आइटरेशन वगैरह सारे पार्ट है. ओनली थिंग इज चेंजिंग हियर इज दिस पार्ट. इसमें ये चेक कर रहा कौन ++1 क्या बोल रहा है. फर्स्ट पॉइंटर मेरा ग्रेटर देन ए होना चाहिए एंड फर्स्ट पॉइंटर शुड बी
Okay, so basically he is saying like first point ऐसे लिखो ना यार, इतना कंफ्यूज करो, ऐसे लिखो। कितना आसान रहता है समझने में भाई, नीचे नीचे आ जाता है, घंटा समझ आता है। अब क्लियर है मेरे को, इतना क्लियर दिख रहा है। बोल रहा फर्स्ट पॉइंट ए से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए जेड, छोटा जेड से, मतलब वही रिजेक्ट सब टेस्टिंग हो रहा है वापस। ब्रूट फोर्स भी काम करेंगे क्या? क्या हो गया? ओ, तो मतलब यहाँ पे तो ये नहीं आना चाहिए। Why did this fail for this two test case, bro? मैंने भी अलग अलग लिए रखा है। तेरा सॉल्यूशन पूरा कॉपी करता हूँ, क्या आता है मेरे को, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया था। I don't think this will work now. फोर्स से नहीं होगा। Since test case is too much big, और सारे पेस्ट हो गए मतलब। ரைஸ் சாப்பிடுவல. Okay, the last two test cases are not getting passed in the brute force. Let me tell it. सेट करने की वजह से मतलब नहीं गया। आई थिंक ये सेम कर दिया वापस, सेम। How is this working? Count will be my 0 and character will start from small a, goes till end of the small z. You could have written fucking character, bro. Why the fuck you wrote a number? Pretty much character minus 32, which will give me the uppercase. It's like 97 minus 32. And my last lower is minus 1 and my first upper is infinity. And goes till end of the word length and the word of I equals to lower. Which is my lower of I. Lower will be my I. If word of I is lower, where is lower? Okay, if it is small case, then the last index will be stored here, and word of I equals to upper, and first upper is equals to infinity. Then only yes will be. Okay, let me try this one. We are getting so many approaches for seeking this problem. क्या ये काम करेगा ब्रो? Yeah, it works fine, bro. They had a simple, easy solution, but why it's only getting like 17% for every day? No matter what solution I paste, I'm getting only 17%. इसको कमेंट कर देता हूँ, will uncomment our solution. Map वाला. Do we really need two map? दो मैप की जरूरत होते हैं? इसने ताला बंद किया ना।
What's up? What's up, Mr. Wrench? Wrench boy. रुक 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 रुक। क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यार? अच्छा मेरे से तो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मैं इसको करवाता हूँ। लेट मी लर्न लेसन्स फ्रॉम। ओह वन हाउ ब्रो? हाउ ओह वन भाई? ओह वन थोड़ी ले रहा है। यहाँ पे मैं एन कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे एन कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे एन कैरेक्टर गेट कर रहा हूँ भाई। हाउ द फक सेइंग दैट ओह वन? नो ब्रो, आई डोंट बिलीव। मतलब 26 character will be like oh one. Okay, 26 will be getting ignored since it is a constant number. Then it is oh one. Damn, I didn't think of it. So people are using this thing. Now I understood. बट मैं रिजेक्ट मार दूंगा, इतना तो नहीं गया। आई थिंक यही वाला एक बंदा ने कर रखा है। आई थिंक यहाँ पे इसने कर रखा है शायद। हाँ यही है। जीव यू जेली जेली अपर लोअर। ये क्या है? ये क्या है भाई? इतने दिमाग चलाते हैं भाई लोग। लास्ट का तो हो गया। चलो सी एच भैया वाले में जाते हैं। वी हैव कार्ड्स देयर। भाई लीड कोड करना था भाई। सी एच भैया का लॉगिन कर रखा है। he has given me the access to the lead code. Now we have the premium guys. इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। I will just look for the problem and solve it here. I will learn the process from there. बहुत कुछ लिख गया है। इसको रहने देते। उड़ा ही दूंगा यार, रहने देता हूँ, बाद में काम आएगा। And this is not needed, this is not needed. Let the Excali be here since we can use it for the next part. We have this one now. Excali, I will open it. Excali. Let me close this. We have the premium one. I mean the lead code one, premium. How do okay, I think I can find it here, I guess. I think I can find it here. How do I find the learning? Oh, here it is. Beginner section. Where's the beginner? Oh, here. यहाँ पे we have so many cards. He has given me the access to the premium one. I mean his account. Just add me his account. Intermediate नहीं जाना. You have to go in the beginner part. Yeah, intermediate part. No. Explore track part. Intermediate तो मतलब pro level होने. ये रहा. We have everything. सारे टॉपिक्स हैं, but we need to pay for this thing. ना ये तो खुल गया. I think this one was asking for money. $44 I guess. $30. $40. And even this one has for $50.
Machine learning is open, damn bro. I will learn this shit. CH भैया कहा ये? I don't know, man. What is your take? It took it took my job. I don't know if it took my job or like there were no project really. I mean the company slowly started dying. So previously I used to get so many tasks and have to do so many things. I used to get so many tickets. I have to solve them, and in the end of the day, I have to provide a report of everything done. But slowly after 8 to 9 months, I guess not after 8 to 9 months. After this year started, then the influence of AI started growing more, and eventually the project stopped coming to our company. I guess not my company. I mean their company. I'm just a fucking employee, man. If someone pays me more, I'll just jump. That's how the real world works. So what do we have here? In this chapter, we will begin. Let's go from the scratch, bro. Don't have to struggle after later. I even need to learn Rust since Rust is a modern language. I have asked the AI mode today when I was sitting in the hospital. I asked for the AI, can you suggest me? Can you suggest me like low level language which will be useful for me in the job market and popular even in the big companies and even like mostly used in the companies right now. And let me know the modern thing only. Then it suggested me to, yeah, same here. I'm pursuing BTech and now I'm rethinking my decision. Bro, I don't know what we are going to do, man. I mean, you people have more time right now. Since you guys are just graduating, right? So you might be getting more opportunities from your college itself. I guess I don't know. The placement cells might be providing you placements, but in my case, like I have to hunt HRs in offline mode and I have to find some interviews, and which is pretty much harder right now. But I think you have time. You're still in fourth year, right? Is it end or like it's starting right now? If it is starting, then you have more time you can do. Don't give up. Even I lost fucking job and I'm grinding like for 50 days. I still feel like a fucking noob now. And yeah, I'm noob. I agree with that. In the DSA part. Let me ask. Seed will say about the Rust right now. This is. I will learn Rust slowly. I will start learning Rust. Since Rust can be used for writing the fast. I mean, how do I say that? I don't know how the fuck I should explain that thing. I mean, it is really very fast, and how even more people have rewrote their entire code in Rust right now. For example, we have Discord, and we have so many of what are the softwares. Since it is faster and yeah, it doesn't get stuck and look, even bun from there it shifted to the Rust,
which is like 1 million lines of code base, have been shifted from Zig to Rust to eliminate the frustrating memory leaks. And even Dino, and even we had the Discord here, but I don't know why it's not showing the Discord. I've seen about it. Here we have the Discord, and even Dropbox. Most of most of the popular products have shifted their code and rewrote everything in Rust now from whatever was there in the traditional language they were using previously, and now they are like using only the Rust. It is faster, right? I mean, even modern web servers are like using the Rust. If you look at the big companies, you might not be able to see the JavaScript and TypeScript. Mostly they use Rust, which will be an advantage for me if I learn Rust. Then I can say like I can write in good code in Rust and like yeah, which is pretty much faster than JavaScript. So if it is faster, then my server also will be faster. I'm also learning maybe Rust to seek around. Maybe seek Rust. I'm also learning it. Let's learn together. Shall I? Shall I create a new? Shall I create a new? What do you say that? I mean, text channel for the Rust. Let me name it as Rust dump. Let's learn Rust here, bro. And we will have a separate channel for Rust also. Since this is trending and even useful for us and give us an advantage in hand, we should learn it. I think Wrench knows Rust. Wrench is like pro in Rust. You know Wrench, right? Wrench the pro coder. This guy. For learning, if you know some language, it can be it can be either a low level language or high level language. Since the programming concept remains same, only the syntax get changed. So you can just learn the other language in a week. I guess I don't know, like in a week or like maybe in 5 days. Pretty much closer enough to write and not write a production level code, but I think you'll be able to write an beginner beginner to intermediate level code after you write so many lines of code in that language. Even Figma has shifted their server, man. Damn, bro. Multiplayer server, which is like, and I think they might be using the WebSocket there. So using TypeScript might be taking so much time to load and pretty much bloated there. So they shifted it to Rust again for the ultra low latency, which is like to reduce the lag. Official docs. I've never seen official docs. We have a Rust official docs. Let me search Rust, bro. Rust documentation. Sorry, get Rust documentation. Here, learn Rust. We have Rust links. I guess I don't know. I've seen some YouTuber doing that thing. We have something called as Rustling. Here we have Rustling. Rustling is like some sort of small exercises you have to do in the Rust to learn the basic syntax and other stuff. There is a website called as Rust by examples. You can try the basics understanding. After that, you can make a basic projects and read the open source code bases. And there is a website called as Rust by examples. What the fuck you're saying again? Same thing. It got duplicated. Bro, your text got duplicated, man. How do we contribute to a Linux? What kind of language do we need to learn for contributing in Linux?
Will it be C or C++? I think C. C. Cool. Either we can learn C or Rust, since C is C is pretty much older in market and it has so many resources and even demandable, right? Like Linux kernel is completely made in C, right? You can even use Rust, bro. Rust is officially no longer experimental and its core is permanent part of. Yeah, you can even learn Rust. Then we're in good hands, I guess. You can go with the Rust. Since Rust is multi-purpose, I guess. Yo, Thor, look at this project, bro. This is cool, bro. Off topic guy has shared his profile, or I don't remember that guy. Ah, yeah, there it is. I'm not promoting or doing something, but this is cool project. I used it. I loved it. I think you guys should try this. Even the sound effects are cool, man. Like it's soothing enough, pretty much smooth enough. Let me type now. Why that sound is not coming? 63 word per minute. Sound क्यों नहीं आ रहा, bro? Did I mute it? अब आ रहे हैं sound. Where do I change the sound? There was an option, pretty much cool option to change the sound effect. Why do I don't have the option to turn on this thing, bro? Did he disable it? Yeah, cool project. Do you know this guy? This guy has an even cooler project, bro. I have got this guy's profile in the Chai code server. Look at this. This is image sonification, and this is pretty much how do I say this? I mean, this is made by using some sort of NASA's algo. I mean, they use this in this space. He shared some resources, but I don't remember the name. But this runs on some sort of NASA's current algos used for sonification. What it does is like creates your image to an audio. Let me play this. Even we have an audio to image. I didn't try this thing, but let me try this. If I put this thing, will I get an image now? See, it even gave me the image, the previous image of that. Look at this. Isn't this cool project right now? What it did is like it converted the audio to, photo to an audio by using sonification algorithm. And after that, it even has a reverse algo where you upload the audio and you will get the image. What I think is like, did he map this thing or like he's really running through an algo? I don't know that thing. Upload multiple and encode them into PNG. Let me try this. We got this image from there. I don't know what this hell is. Image to file. Let me try. Will it convert it to a file? Magic byte not found. I think some server issues with these guys. I don't know, but this guy has a pretty much good profile and everything is cool here. Evala I didn't see, bro. I think this is something related to npm package and
I think what he made like that keyboard thing. For that thing, he made an npm package, and you can even use with the node, I guess. Kind of shit. अबे वैसे resources क्यों मांग रहा था? To learn Rust, man. To learn Rust. How long? How long am I supposed to be a web developer? I don't feel like web development has an future in future. कुछ भी बक रहा हूँ भाई. I am high right now. Can you share the link? Can you share the link? Wrench का portfolio. Have you seen Wrench का portfolio? I don't think we will be able to see. Wrench, do you know this thing? See the username. See the username, bro. See the username. Dun, 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 dun. कल मैंने 3 जावास्क्रिप्ट को सॉल्व कर दिया भैया का उसमें. कल मैंने भैया का अकाउंट पे 3 मतलब सॉल्व कर दिया जावास्क्रिप्ट का. उनका पूरा पाइथन का था भाई. और इसमें इसमें बहुत अच्छा है भाई. क्लीन दिया सारे कुछ. यहाँ पे देख एक्सप्लोर कार्ड में जाएगा. यहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग. इधर मैं कुछ नहीं बना रहा अभी. I'm planning to make something similar like that. Maybe with a multiplayer mode और मजा आएगा. What do you say? We already have in some website called as Type Racer. Yeah, he's hacker. He will hack my account now. I have his access, bro. I can even change his name. I can change it. I can change his name to Range Gay. I can change the gender to gay or a non-binary. I have so much power in my hand right now. I'm just joking, man. I was so thankful for sharing this thing. Yeah, he's hacker, I know. GitHub पर नहीं डाला personal use. Did you deploy it or not? I mean, do you run on the local host? Can you share the? How do I say that? Can you share the tunnel link? Friends, do you know one thing? I got an क्या बोलते हैं उसको? I got an Rubik's cube, man, today, and I was able to solve the first layer. Um, क्या था उसका cube ले लो. I got it for like 161, but the cube quality is so good, bro, so good. Cube quality is so good, bro. ड्रिफ्ट नाम का था आई थिंक. ब्लिंकिट पे मिलेगा. 200 रुपया नहीं है. My brother got it for like 160 rupees in Bangalore, and he bought it today. मेरे से फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया था. बाकी लेयर में आई विल लर्न. आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. यहाँ पे ब्रो एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड हाउ टू डू व्हाट टू डू. भाई ये क्या आ रहा है? व्हाट द फक दिस? सीएल शेयर करना. कोड शेयर करेगा क्या? आउटपुट शेयर कर. आउटपुट वीडियो बना के शेयर कर. रन तो हो जाएगा ना. Where did you go? He was asking for an Discord link, right? I think he left. Did he join Discord or not? He asked for Discord link. I don't know if he joined. Someone joined here. Rajesh. I see. Why every time this emoji gets changed?
Bro, I literally made an app for solving the Rubik's Cube because I was not able to solve it. What the fuck? I don't think Rubik's Cube is harder once you learn the steps, I guess. Now look, I have done 2 steps करा मैंने इसमें discuss. Can you share the link? Share the link. You are moderator, man. Nobody can ban you. इसी में उतना दम नहीं है तेरे को बैन कर दिया. अगर बैन कर तो बता देना, मैं अनबैन कर दूंगा. गाइड टू द रस्ट एडिशंस. इसको मैं बाद में लर्न करूंगा. आई विल लर्न बाद में. आई विल लर्न कर. भाई ये क्या बग गया. The first one is like CLD app and direct videos upload हो जाती है and जो convert होकर encrypted में. What did you do here then? Did you make a zipper? Did you make a WinRAR tool for zipping? Encrypted बोले तो did you compress it and made an archive out of it? भाई घंटा भी नहीं सकता भाई. अरे उसके लिए एल्गो यूज होता है ना. एल्गोरिथम फॉर encryption. We have something, I don't remember the name. कुछ तो होता है. सिमेट्रिक एसिमेट्रिक द टाइप्स ऑफ उसका होता है एल्गो. We have something called as RSA. तो गिटहब वगैरह यूज करता है ना RSA. AES, yeah, I have heard of it, but I've never. What does the bcrypt use, bro? What kind of bcrypt use? Bcrypt में we provide salt, right? Bcrypt algorithm. Bcrypt uses a ballfish cipher. Ooh, what is ballfish cipher now? Literally, I don't understand this shit, but yeah, it looks cool. तो क्या बोल रहा हूँ. वर्जनिंग आ रहा है एंड कॉस्ट आएगा फिर सॉल्ट आएगा. As we enter 10 7, mostly we go with the 10. Hash is like the password का hash. So this is how the password is found. Can we really, I mean, decrypt the password without using this thing, bro? क्या वापस इसको रिवर्स कर सकते हैं बॉलफिश को? I don't think like you can decrypt the encryptions algos. Since they created it for the encryption, there is no way we can decrypt it. That's the reason it's used in the encryption. Yes, sir. DSA कहाँ आता है? DSA कहाँ आता है? यहीं आता है. ऐसे ही आता है DSA. I mean, this is not DSA, but more closely related to securities. But yeah, you have to learn since you are a full stack developer. You must know this. Must know मतलब senior level लोग को पता होना चाहिए. पर junior लोग पढ़ लेंगे तो क्या ही हो जाएगा. Learning is never waste. Oh, wrench वाला. Can you share the link, bro? अरे थोड़ा तेरे को नेक्स्ट जेएस पूरा आता है क्या थोड़ा? मेरे को नेक्स्ट जेएस का रिवीजन करना है एक बार. कुछ बनाएगा नेक्स्ट जेएस में या फिर रस्ट में कुछ बनाएगा? रस्ट को सीखने के लिए कम से कम मेरे को 2-3 घंटा लगेगा. उसका सिंटैक्स एंड कैसे कैसे यूज़ करते हैं पब्लिक ये म्यूटेबल वगैरह क्या क्या तो होता है. मैंने कैरियन करके एक बंदा है. आई हैव सीन हिज स्ट्रीम. मैं देखते रहता हूँ रेगुलरली ऐसे. वेयर इज दैट अकाउंट? क्या हो गया ये? Nah, bro, I'm not super senior. I only have an year of experience, man. I'm not even senior. अच्छा, तेरा प्रोफाइल में है. मैं ढूंढ रहा था भाई. What the fuck? मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं भूल गया. भाई लोड ही नहीं हो रहा है. ये क्या डाल रखा तूने भाई? दिख ही नहीं रहा मेरे को.
नहीं है भाई, डू यू हैव टू क्लिक इट? नहीं हो रहा है। लिंक ऐड कर दे भाई, थोड़ा डिलीट कर दिया तूने। आई ओनली हैव अ गेम कलेक्शन ही है। तेरा गेम कलेक्शन में क्या है? और यू लाइक डार्क सोल। मेरा देखेगा? मेरे को ये सब खेलने का मन ना बढ़ता है। आई वांट टू प्ले दिस थिंग बट आई डोंट हैव मनी। ये मैंने खेल रखा है, ये भी खेल रखा है, ये भी खेल 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 ये सब खेल रखा है। दिस इज गुड गेम, गेंशिन इम्पैक्ट। दे दिया तूने। ब्रो व्हेन डिड यू अपडेट दिस? अच्छा ये गिटहब का है, ओ आई सी। हाउ पासवर्ड स्टोरेज फेल्स अ सिक्योरिटी टर्मलाइन एवरी डिफेंडर शुड नो। स्टोरिंग पासवर्ड। आई एम लेजी ब्रो। Plain text password are stored exactly as type. 2009 draw queue. Yeah, I know about this. We have this in the Kali Linux, I guess. बनाते हैं bro. Yeah, we can do man. Rest से. Golang, why Golang? Why not Rust? Rust is popular right now and pretty much employable, I guess. I don't know about the Golang. Even the fucking AI did not suggest to learn the Golang. मैंने बहुत सारे रिसर्च वगैरह किया। रिसर्च मतलब गूगलिंग किया था, डॉर्किंग किया। डॉकिंग बोल रहा हूँ, डॉकिंग इज डिफरेंट थिंग। या डॉर्किंग डॉर्किंग है बॉक्सिंग। हाँ, usually the key is stored somewhere safe, but yeah, we don't know like when the hacker can dump our whole database itself. So this is not safer enough, I guess. Even if you're storing it in the GitHub credentials, I think it is safer enough. We have something called as GitHub credentials, right? GitHub credentials करके होता है ना कुछ. You can put the env there, I guess. Credentials manager. क्या बोल रहा है? तो गोलांग सीखूं? गोलांग ब्रो, ब्रो 45K jobs man, 45K. $45K jobs, bro, and 81 Rust jobs in India. Let me search for Golang. जो जीतेगा उसका करूँगा भाई. Golang, bro. What the fuck भाई? 4,000 ही है भाई. सारे सीनियर हैं, जूनियर थोड़ी लेना है. अगर तो कुछ उखाड़ देगा, बहुत उखाड़ बड़ा उखाड़ेगा ना भाई, गोलांग कुछ भी, रस्ट हो गोलांग हो कुछ भी. अगर तो बड़ा कुछ झंडा गाड़ गया ना गिटहब में या फिर कहीं पे, एंड इफ यू पोस्ट ऑन द लिंक्डइन, तेरा डीएम स्मैश होगा भाई कसम से. केक स्मैश हो जाएगा तेरा डीएम में. डैम. वैकेंसीज बोल रहा है बट जॉब है क्या? 4,000 इतने जॉब्स हैं. जावा स्क्रिप्ट दिखाता हूँ तेरे को अभी, जावा मुंह फट जाएगा तेरा. जावा स्क्रिप्ट में इतने जॉब्स हैं बट वाई आई एम नॉट इवन एबल टू गेट इन सिंगल वन. अरे फकिंग क्रेजी हो. वेयर इज जावा स्क्रिप्ट ब्रो, व्हाट द हेक?
6,000 तो मतलब लिंक्डइन पे तेरे को मिल गया, नौकरी पे क्यों नहीं मिल रहा? 66K एंड वी हैव 3,004। इतने सारे वैकेंसीज मेरे मेरे यहाँ मेरे एरिया में है। व्हाट एम आई इवन डूइंग देम? ओह, let me let me make the AI to fight with each other and decide it for itself. AI से AI मोड तक बात करवा सकते हैं क्या? कैन वी डू दैट? Learn in a weekend. Oh, this is something similar to the JavaScript. I mean Java. जिसमें मतलब वी हैव एन गार्बेज कलेक्टर, तो जीवीएम मतलब अपने आप क्लियर कर देता है सब मेमोरी वगैरह। सो वी डोंट हैव द प्रॉब्लम लाइक सी प्लस प्लस वाला में जो पॉइंटर का इशू होता है, कुछ भी मतलब कुछ होता है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। Since I'm not a C++ guy, I can't say that. Built in an ultra light Goro roti bata a lightweight thread, okay, threading, save data, race face, asynchronous, fast blazing, bro. Look at this, blazing fast और fast में कितने अंतर? Fast track to a backend development. Choose Rust if you want to build an high performance system. अब तू बता क्या सीखेगा तू इसमें से? एन TCS एनक्यूटी क्या है ये? TCS एनक्यूटी डीएस नहीं आता भाई, मैंने सर्च कर रखा है यार पापा, ये वाला क्या? आई थिंक मैं, ओ ठीक है फिर गोलंग करते हैं, अपने को तो जॉब चाहिए। ये क्या है भाई? वो व्हाट इज दिस? मेरे को इतना भरूंगा तो मतलब मेरे को इंटरव्यू देगा, क्या है ये? भाई इसमें ये क्या है? नो TCS NQT IT and what is then TCS Ion NQT Cognitive? What is difference between this then? मतलब इसमें से करूंगा तो विल गेट एन 3 to 8 LPA एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये मेरे को कम पड़ रहा है। Rest is not hard but just different method of handling the memory. Oh, इसको गोlang करो भाई। रस्ट उड़ा दे भाई, रस्ट उड़ा दे। गो विद द फ्लो। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मैं मैनुअली डिलीट नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल गो एंड एक्टिवेट माय बॉट एंड आई विल टेल इट टू डिलीट एवरीथिंग।
तो और जो डिस्कॉर्ड बॉट बना रहा था ना वो बन गया था। और है क्या? और चला गया क्या? इट्स ओके भाई यार। 55 डेज हो गया भाई, बताओ यार क्या करूँ यार। जॉब 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 भी तो नहीं करना भाई। रोज डीए से करूँगा तो चल जाएगा क्या मेरा? थोड़ा सा टिप्स दो यार, तुम लोग मेरे भाई लोग हो। प्रोवाइड मी ब्रो। दिस इज नॉट माई थिंग। आई नीड टू हिट हेल्थ pretty much good enough. Purge. Yes sir. Rush dump is clear now. Ulang kabinas. Do we really need a gaming one? Gaming ka nahi chahiye. Focusing on game. Country. Nobody's even using this. Resources mein what did we share? Projects mein nobody is sharing anything. In jobs, guys just start spamming in the job section man. We have to support each other. Blogs में क्या दिख रहा है? अच्छा, बेंच का लास्ट डिलीटेड में से LeetCode ये dumb. I'll create and something for other programming, coding, general बनाया था. What does the forum does? What does the forum does? Create a space for organized discussions. What does it does? Oh, okay. ये वाला अच्छा लग रहा है वो. चलो हो गया ये. सेंट्रिक्स ने काम कर दिया अपना लोग. Bro, you already know Go, man. You already know Go, right? You are learning Go, right? How hard is this, bro? This is not easy. I tried one time to do the animation in my phone. I sucked it at hard, so hard. With my fucking fingers. Undefined. What the fuck? I said, let's. Can you say the difference between these two, man? 30 hours plus free online learning course and basic cognitive skills help you to prepare better. And one free practice to check your preparedness before the actual test. Psycho. Psycho. Psychometric. सुना लग रहा है मेरे को. साइकोमेट्रिक मतलब लॉजिकल रीजनिंग का. अरे यार कैसा भाई मेरे को इंटरव्यू मिलेगा ये बता मेरे को. मैं 900 रुपये 1000 रुपये दे दूंगा बट मेरे को इंटरव्यू. होली शिट. इट फाउंडेशन. I need an I need an way to go.
बस एक ही एग्जाम होता है क्या? सिंगल एग्जाम अलोन? जस्ट सिंगल एग्जाम? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे डू आस्क? हार्ड होता है क्या? 3 to 8 LP is not bad, man. For me, since I was earning like only 2.5 in the previous one, I feel like this is pretty much big off of this compared to the previous company where I was just working for the experience. I was even not getting paid for a month, I guess, a month or like maybe. क्या बोल रहे हैं? पैसा मत देना. How do we do then? Like it's asking for activate now or buy now. What the hell is this then? How do I even do this then? Can we apply without this thing? Oh, bro. क्या ट्रांसलेशन चूतिया जैसा ट्रांसलेशन कर रहा है? हाँ यस, पैसा मत देना तो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ आई विल नॉट गिव यू मनी. आई डोंट वांट टू गिव यू मनी. क्या ट्रांसलेशन है भाई? भाई तो बूम हो गया. Emphasis comes under TCS. Oh, you mean like TCS? TCS Ion Test consists of these companies inside them, I guess. Software developer builds Belgium. What the fuck is Belgium? Belgium तो कोई अमेरिकन अमेरिकन कंट्री स्टेट और सिटी है. विशाखापट्टनम. TCS graduate training. These guys are like I cleared the interview. We even have an interview after that. तो मतलब अपने को ग्राइंड करना पड़ेगा. Can't go directly. एक ट्राई तो बनता है. Does it has an validity? How do I know how much time does? अच्छा, next test is on 26th June. ये क्या है? February, March, April, May, June. Next month. क्या बात कर रहा है भाई? भाई एक्टिवेट कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा ना ब्रो? होता है नहीं होगा क्या? जून में यहाँ पे लिखा है जून. नेक्स्ट टेस्ट डेट इज जून 2026 और जून एग्जाम. मतलब होते रहते हैं रेगुलरली, आई गेस. अप्लाई कर दूंगा, क्या करें अब नहीं मिलेगा तो आई विल ट्राई दिस वन. व्हाट इससे मेरे को इंटरव्यू मिलेगा? मेरे को किस में करना पड़ेगा? 99 वाला करना पड़ेगा? 999 वाला करना पड़ेगा? इसमें तो कुछ दे ही नहीं रहा, फालतू है. तो बस ऑनलाइन में वीडियो दे देगा, मैं इसमें क्या ही करूँगा. इसमें फ्री कैरियर कुछ तो बताया है, कुछ तो करेगा. ये सब फालतू है, कुछ भी नहीं इसमें. वन फ्री टेस्ट. मैं 1000 टेस्ट लिख दूंगा. गिटहब पे मेरे को मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे तेरे वैसे.
उसमें से कुछ भी निकाल के मैं कर दूँ। क्या मेरे को यूज़फुल है ये? ऐसा भी होता है क्या, इफ़ आई बाई 999 देन ओनली आई विल गेट, आई मीन प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है? अगर ऐसा है तो फिर बाई वन का क्या करें? अब नहीं मिल रहा तो आई विल ट्राई दिस थिंग, यदि नहीं मिला तो आई विल ट्राई समथिंग एल्स। रेस्ट इन पीस होने से अच्छा तो ट्राई करना अच्छा। चल भाई डीएस से करते हैं तो बहुत। ये क्या नाम है, एस अमेरिका, एस you're doing social engineering then। अच्छा हुआ थोड़ा बहुत एथिकल हैकिंग में भी हाथ घुसा दिया था, वरना। अरे है, मैं तेरे को भेजता हूँ, बाद में भेजता हूँ, डिस्कॉर्ड में भेजूंगा। अगर मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना तो यूट्यूब विल बैन माय वीडियो ना। आई डोंट नो, उसको लगता है आई एम लीकिंग समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड बुलशिट, तो मतलब उसकी वजह से इट बैन्स माय वीडियो। बैन बोलो तो मतलब कंप्लीटली रिमूव कर देता है अंटिल फर्दर नोटिस। सो मैं तेरे को बाद में भेजूंगा, अगर होगा तो। आई डोंट नो आई हैव इट। तेरे को देखता है वहाँ पे, एक बार देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं तेरे को भेजता हूँ बाद में, डिस्कॉर्ड में भेजूंगा। डिस्कॉर्ड में है क्या तू? डिस्कॉर्ड में तो है ही तू, डिस्कॉर्ड में तो बात होते रहता होगा। चल उसमें कर, डीएस से करते हैं, बहुत हो गया मुझे। दो लैंग सीखनी है, डीएस से करनी है बस अभी। इंट्रोडक्शन में क्या ही दिया है इसने, इस चैप्टर में बताया कि विल बी कंपेयरिंग द अरेस इन द रियल वर्ल्ड एंड सॉर्टिंग द लास्ट, सॉर्टिंग लॉट्स ऑफ द डीवीडी। ओके, इट्स सेइंग लाइक I mean, in the other way, it's targeting the array in different names. We will look into how we look at how we can create and work with the arrays in Java. Cool, bro. I'm okay with Java. Syntax is not a problem right now. Send coil mail, भेजना cold mail भाई, hot mail, cold mail, ये सब भेजना सारे। What is an DVD box? I don't need this. I don't need this. I don't need this. Massive consecutive ones. I can do this. I mean, approach मेरे को, I have an idea. Like literally, if I see this question, I am able to come up with the approach in my mind. I don't know how the fuck it got registered in my mind, but I know like I have to maintain 2 pointer and 1 point, two, not 2 pointers, two counts will be like current ones and the maximum ones. Whenever see a zero, then what I will do is like I will put the max count inside my this thing, and the current count उसको max में डाल दूँगा, and I will end the loop, return the max count, खत्म। Find the numbers of even digits. Maybe this thing also I can do. Since I've done so many questions, I'm able, I don't know, like after seeing the question name itself, I'm able to come. So as I've sorted, you can do this, right? S into S. So we can skip all this, I guess. Let me mark. अरे मार्क करना था भाई। अरे यार क्लिक हो जाता, उसके बाद चेक हो रहा है। He has added an on click event listener here, I guess. Can't I do this shit? I will just skip this. Inserting element into an array. Basic duplicate zeros merge sorted array. I, sorry bro, I can't review your account since I'm not pro. You can post your you can post your LeetCode ID in the Discord and people will rate you out of there. Deleting an item, remove an element. Can't we do this thing? Can't do this filter. You can even use a filter. I think. What is this? We have a question. अरे को sort भी करना है क्या? Have to do it in place. I just replace.
Swapping logic, we can do this bro. अपने को easy वाला में time waste करना है। क्या हो गया भाई, किधर गया वो? अभिषेक ब्रो, तुम you can share your user ID. I will just look on the top, but I can't tell in the detail. I mean, like I'm not a pro. Since I'm also learning DSA, I can't guide you with that thing, but I can. I mean, देख तो सकता हूँ, I can review. ऊपर ऊपर वो वाला ऊपर नहीं, मतलब ऊपर ऊपर मतलब देख लें डीसी क्या हो। वो तो मेरा डीसी में ही था। हाँ, गुड जॉब ब्रो। I'm promoting you to the mod now. Control the whole server. You and Wrench have the permission, I guess. How many people have the permissions? Can I see it in the server setting? Roles, where is roles? Okay, there are 3 people who has the mod. Wrench, Thor and Centrix. Alright, good to go. Yo, hell, what's up, man? Abhi Rajput. यार मेरा रिव्यू मतलब it won't be 100% perfect or like maybe what you are expecting from me. तुमने bro like 529 questions solved and you are like AML student, but do you really need an DSA for AML and machine learning? I think you need a practical knowledge in doing ML and optimizing the AI models, I guess. Do you know how to refine an AI model? क्या बोलते हैं उसको? Fine tuning. Do you know how to fine tune an AI model? What is BMSC? Is this your college name? Damn, bro. You literally cook, bro. Do you also want to share your LeetCode, Mr. Hell? What is rewind here? Is this some sort of video? Or this is 2025 problem? Since we're in the year 2026. Ah, you're reading a school, bro. You kept increasing. Oh, you're looking for SD role, but why are you even learning machine learning then? Like for SD, you need to be strong in development part, I guess. AML is for like only for machine learning part, and who is interested more in the max, towards max. Someone like complete psycho and insane crack guys जो रहते हैं ना like max में पागल वाले. So those guys select machine learning mostly since they excel in that. Since उनको मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा लगता है तो सब कुछ कर लेते हैं मैथ्स वगैरह में. What language do you use? You use Python. I have seen only 3 people using Python. What backend? Like backend मतलब you use Danjo. What do you say that Danjo or Dango? Dango. J is silent, I guess. मतलब तुमको एक AI मॉडल दे देता है, वो हैलुसिनेट कर रहा है. कैन यू एबल टू मतलब फाइन ट्यून इट, make it more how do I say it? Make it more worth it before it was, and not hallucinate after that. Can you do that? If you're able to do that, then I think people will hire you. Django. Day is silent. Django. Oh, Django. Bank. Not bank. Not bank. Django. If you know how to fine tune the LLM model, then you're pretty much in safer side, I guess. You can land in good job, bro. You're pretty much doing good, bro. I guess like you have done like 529 questions, and you have consistency. Like I mean, you did like 939 submissions, and you have consistently grinded for these many months. People will
recommend your profile to interview writers. मैं तो इतना ही बता सकता हूँ since I can't go with the topic thing since I'm not much comfortable myself. Oh, advance congratulations! I think you will be cracking it. Provide us some treatment after you complete it. Just joking, man. Inserting items into an array. Basic array operations what we have. We have an accessing element. We have an index पर direct access करना है. We have how to go to the end of the array, starting of the array. I am not in the college. I'm pretty much bigger than you guys in terms of age. I'm more elder, I guess. भाई मार्केट में नया रोल आया है FD फॉरवर्ड डेवलपर. What the fuck? Are you serious? Holy shit, it's there, bro. Customer environment. Oh, this is something related to tech support with some development experience. I have 10 years of experience in 8 years of experience in SW and previously started a company. Not talking about working at the Plantier, which is a good company. I don't know how the fuck you spell this, but I've heard all about this company. Just mentioning the terms comes in the mistake. He's talking about A bubbles. You're just 21. I'm like 24 or 25, I guess. On paper, I'm just 24, but my real age is like 25. But I don't sound 25, right? I sound like a kid, right? I was born in the year 2000. Last year, oh, last year. Crazy, man. We even have rules for the pipe coder cleaning up कुछ वगैरह. उसमें भी ट्राई कर सकते हैं. Sem ends exams are going on. 6th sem here in the college in the last sem is going on. 16, bro, crazy. You made me kid now. I feel happy like you can't even guess my age if I stand in front of you. Deleting the element from the array, remove an element. Didn't we see this question already? अभी तो देखा था मैंने. I remove the duplicate from the sorted array. The same thing as this I guess I'll swap or I will just store as empty value, I guess. And we haven't searching. We have what do we have? Check if n is double digit. Check if it's double exists. I mean, if n is given as 1, where is n then? I don't see n. Can't understand. Okay, okay, if it is multiples of 2, I guess. When I saw your stream for first time, even I thought you were in college student. What the heck? Yeah, I sound like a kid, right? I sound like a small kid, so people might be getting confused. I'm happy with that. I will take it as a compliment. I don't know, but on the YouTube I sound like a kid, but on the Discord I get, and on the Discord I sound crazy, bro. You might be working. Yeah, I was working for a year, but I don't have a job right now. I'm unemployed. I can't advise you. Sorry. What I will just say, like if you keep on exploring something new every day, so you might be able to find something better enough. But इतना ही advice है since you're already good in DSA, I can't advise you since you're pretty much better than other people who are in college right now.
सर्चिंग के लिए वैलिड माउंटेन अरे, वैलिड माउंटेन अरे, व्हाट इज वैलिड माउंटेन अरे? आई थिंक इट शुड हैव एन पीक एलिमेंट राइट. अच्छा, अंडरस्टूड. माउंटेन अरे इज लाइक ascend ascending से जाएगा and it will descend again. If it is ascending and descending, then it is mountain array. If it is not ascending and descending, then it is not a mountain array. Cool, bro. यार कुछ भी भाई, यार कुछ भी बग रहा है. What the fuck? गूगल वाला में होता तो मैं why would I ever grind for DSA right now? I would have gone in some other company. I will not be grinding DSA in live stream. To be honest. भाई मेरा 11, I got 11 followers on the Twitch, man. Should I start streaming on the Twitch? मेरा communication, I suck at communication, so it's the one of the reason is like I'm fucking introvert. Another reason is like I fucking stuck something. यहाँ पे I got 11 subscribers, 11 followers. जब मैं स्टार्ट करूँगा then I will get crazy. What's up, Desky? हाँ भाई, नजर लग जाते. रेंज गे करके कोई है, नजर लगा. रिमूव डुप्लीकेट. अरे यार वापस वही आ गया. बेटर रिपीटेड डिलीशन algorithm. मतलब this has a path as well as the questions as well as the answers. Nice. Move zeros हो जाएगा. शॉर्ट वेब पैरिटी क्या होता है? मैंने कर रखा है थिंक पैरिटी. इवन इंटीजर को फ्रंट में करना ब्रो. अरे यार, अरे वापस बंद कर देता हूँ कल. इन प्लेस में पैरिटी करनी है. आई कैन डू दिस. रिमूव एलिमेंट सेम एज द डुप्लीकेट आई गेस. कंक्लूजंस थर्ड मैक्सिमम वी कैन डू. थर्ड मैक्सिमम कैसे निकलेगा? पहले एक मैक्सिमम निकालेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे क्या. सेकेंड मैक्सिमम निकलेगा. सेकेंड मैक्सिमम निकाल के फर्स्ट मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए एंड बाकी सब वैल्यू से बड़ा होना चाहिए. सेम फॉर द थर्ड मैक्सिमम. सेकेंड एंड फर्स्ट मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए एंड बाकी सब वैल्यू से बड़ा होना चाहिए. ये सब करने के बाद में मेरा दिमाग में घुस गया. फिर मतलब क्या है मेरे को समझ नहीं आया. स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड अरे एस इंटू एस हाइट चेक करके यार. I don't know what the hell is this. School is trying to take an annual photo of the all students and students are asked to stand in a single line, non-decreasing order. This is ascending order by height. And that ordering represented by the integer array expected of array is I student in the line. If given an integer height representing the current order and the students are standing in the each height of I and I is zero index. Okay. Written the number of indices where height of I is expected. Do you have an expected array? हॉस्पिटल में रहता हूँ भाई. हॉस्पिटल में मामा का लड़का है. उसका हाथ में मतलब होल है. And even he has some sort of some more diseases. So मतलब यहाँ पे चेन्नई में admitted है. So they don't know the language. So I go with my mom there. I stay till 6 o'clock there. After that I come to my home and I grind for the PSA after that. Till 10 o'clock I guess. After that I sleep. And same routine again daily. एक महीना से वही चल रहा है since they have come here to show. हाँ वही है. हाँ नर्स नहीं बना. मतलब अरे उधर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है ना. तमिल नहीं आता.
मत बोल भाई, मरीज 8% है भाई, हार्ट अटैक आ गया। यार ये एक्सपेक्टेड वाला मतलब रहेगा क्या भाई? देयर इज एन होल इन माय हैंड। शिट, now you're doing dark jokes। अरे एक्सपेक्टेड वाला मतलब रहेगा या फिर वी हैव टू क्रिएट इट, और भी सपोज टू क्रिएट एन एक्सपेक्टेड अरे, लाइक एक्सपेक्टेड वाला रहेगा पहले। आई थिंक एक्सपेक्टेड अरे होगा, आई थिंक सारे में है, बट इनपुट इज ओनली गिवन फॉर द हाइट भाई, बस हाइट दिया है। वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड। आई नो, अरे बताया एक्सपेक्टेड वाला क्या है यार? What will be my expected then? Let let this ordering be represented an integer array expected। क्या बोल रहे हैं? Students are asked to stand in the line, single file line। What the fuck is file line? Line तो line होता है, it should be ascending or descending। file line का इन लोग का क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग घूम जाता है। Let this ordering be represented by the integer array expected। ऑर्डर जो हो रहा है उसको एक्सपेक्टेड में कन्वर्ट करनी है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉर्ट देम ब्रो। सॉर्टिंग हो रही है, असेंडिंग से डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो रही है, सॉरी डिसेंडिंग से असेंडिंग सॉर्टिंग हो रही है। तो ज़्यादा ही टाइम लिया इस क्वेश्चन पे। किधर गया वो? हाइट चेक करता ना, can't I just check mark it? So when I come later I have an, हो गया ये, बाहर कैसे निकलूं? इसके बाद यहाँ पे जाना है क्या? What should I go next? Is this thing or this thing? Array and string है, you can go with array and string आगे। क्वेश्चन से हो रहे हैं, आई एम एबल टू कम अप विद लॉजिक नाउ, बट मेरे को बड़े बड़े जो रहते हैं स्लाइडिंग विंडो ये वो, उसमें मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आई थिंक ब्रो, बहुत टाइम देना पड़ेगा। 2D अरे वगैरह में मेरे को आइडिया नहीं है उतना। आई थिंक परसों या फिर परसों डे बिफोर स्टडी फिगर आउट किया था कि मतलब 2D अरे का आई कैन रन another loop and store it in a value, and I can get individual array in them, and if I run through them then I will get the values inside it bro। इंट्रोडक्शन टू अरे तो हो गया अपना, वहीं पे हो गया। व्हाई इज इट्स हिडन? ओह शिट भाई, इसका आंसर दूंगा तभी खुलेगा क्या ये? ना ब्रो, 2 पॉइंटर वगैरह यहीं पे है, यहीं से बड़ा बड़ा स्टार्ट हो रहा है। Instead of going to the array, you can go to the linked list. Since linked list is a single topic, there won't be any redirection to somewhere else, I guess. In this card, we are going to introduce another data structure called as linked list. So if I learn in Java, then what? What do you want, bro? Again, you're just यार सारे ब्लॉक क्यों हैं? अब तो दिखा भी नहीं रहा वही इट्स ब्लॉक। लिंक लिस्ट के पहले भी कुछ है क्या? टॉपिक जाना पड़ेगा, आई कांट जंप लाइक दिस। यार थोर मेरे पे एक गिफ्ट है, मैं तेरे को शेयर करता हूँ बाद में। उसमें से डीएसएल सीखना भाई सही सिखाता है, उसी में से मैं सीखा हूँ। जो भी 150 जो भी है 120 जितना भी किया है, आई डोंट रिमेम्बर द काउंट, बट आई थिंक आई हैव डन मोर देन 150 आई गेस। 155 के ऊपर होगा शायद, तो चेक मत काउंट। 2
तूने आज वाला क्वेश्चन किया कि नहीं तौर? आई थिंक तौर ऑफलाइन चला गया। आई हैव 158। मेरा कंसिस्टेंसी इज लाइक 2 months सिंस इस मंथ में मेरा जॉब गया। देन आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रीमिंग। फर्स्ट 2 दिन डिप्रेशन में गया था, फुल डिप्रेशन। क्यों निकल गया मेरा। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड यहाँ पे डिप्रेशन, यहाँ पे डिप्रेशन, यहाँ पे 2 दिन डिप्रेशन, फिर यहाँ पे एक दिन डिप्रेशन, फिर सारा दिन कंटिन्यूस। मतलब ये देख, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना दिन भी किया हूँ ना, ये सारे मतलब हॉस्पिटल आने के बाद किया भाई। मतलब समझ रहा है कितना करना पड़ रहा है। उधर बैठना उतना भी नहीं है भाई, चलना पड़ता है। कितना चलता हूँ मैं, तेरे को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं कितना किलोमीटर चला हूँ। अरे पब्लिकली बताया नहीं जाता भाई, ऐसा तुमको शेयर करेंगे बाद में, देख लियो। तुमको लग रहा है मैं जोक कर रहा हूँ? रुक एक मिनट। आई हैवंट सेंट एनीथिंग भाई। मैं दिन का 9 किलोमीटर चलता हूँ भाई, कम से कम रोज। आई एम नॉट इवन जोकिंग। ना ब्रो, यू थिंक समथिंग डिफरेंट ब्रो। अबे ये गया क्यों नहीं अभी तक? वाईफाई कनेक्ट नहीं है मैं ये देख, ये देख कितना किलोमीटर है, देख रहा है ये? 8.11 किलोमीटर टुडे ओनली। कितना स्टेप्स है ये आज का, बस है ये। एंड मैंने 22 मिनट्स मतलब इतना स्टेप रखा, बहुत फास्ट चला था मैं। यार डॉक्टर इधर उधर करवाते रहता, मेरा दिमाग खराब। यस आई हैव ओपन डे। अबे तुम लोग कुछ और समझ रहे हो, मेरा तो यार डेस्क की वैलोरेंट खेल रहा भाई। मेरा रोज का 9 किलोमीटर चलना पड़ता है, अब कहाँ से वेट बढ़ेगा मेरा, बता तू। 4 रोटी खाता हूँ, 4 नहीं, कभी कभी 2 खाता हूँ, कभी कभी 3 खाता हूँ। उतना मेरे को 9 किलोमीटर चलना पड़ता है। इमेजिन हाउ, उतना करने के बाद आई एम कमिंग टू डू DSM, या वही रोज जाना पड़ता है। अभी तो ही इज फाइन आई गेस। उसको टीबी का मतलब कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, मंडे को रिपोर्ट देंगे। अंटिल देन आई हैव टू गो एंड कम डेली। आई थिंक कल मेरा छोटा भाई चला जाएगा, सिंस ही केम फ्रॉम बैंगलोर। तो मतलब हो जाएगा, उसको जाने देने हैं। तो मैं तो कल बैठूंगा फिर घर पे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन। भाई यार लिंक लिस्ट का रिसोर्स शेयर करो यार कोई। लिंक लिस्ट पे ब्लॉक कर रखा है इसने। कार्ड पे रहेगा, सारे करने के बाद निकलेगा ये। इसको तो मैं बाद में करूँगा ऑफलाइन में। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंस आई नो, मेरे को अप्रोच पता है कैसे करना है, क्या करना है। सिंस आई हैव बहुत सो मैनी वीडियोस, जिसमें मतलब समझाते हैं कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम वगैरह आता है तो अरे वगैरह का, एंड ये डुप्लीकेट एंड कॉन्सिक्यूटिव टाइप का क्वेश्चंस वगैरह। तो पर मतलब उसमें से आइडिया आ गया। ये क्या मैथ कॉन्सिक्यूटिव। भाई इसको एक महीना से मतलब एडमिट कर रखा है। क्या हॉस्पिटल का नाम ये था? ओमान गुरु।
नाम यार, स्पेलिंग मिस्टेक। ये है भाई, इधर जाना पड़ता है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट वाला। बेस्ट ब्रो, you don't have to even spend a penny there. Literally you will get everything for free if you have the government card, something called as Ayushman card, right? In outside you have something called as Kalenjar card here. Kalenjar card बोले तो एक पॉलिटिशियन का नाम था, जो पहला सीएम था ना, उसका बाप का नाम कलेंजर था, तो उसके नाम से मतलब ये कार्ड वगैरह बनता था, हेल्थ कार्ड वगैरह। So you can go and visit this hospital and you can get any treatment. You had it. ट्रांसलेशन आता है कसम से भाई, मेरे को और का भी मतलब बोल था भाई, व्हाट द फक इज ट्रांसलेशन इज रॉन्ग विद द यूट्यूब, क्रेजी कर रहा भाई। यहाँ देख, इट हैपेंड 25 years ago ब्रदर, आई डोंट नो, आई हैड दैट टू राइट। क्या ट्रांसलेशन है भाई ये, बंदा को पागल बना देगा ये। 25 साल पहले हुआ था भाई, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। ट्रांसलेशन देख के मेरा पड़ जाता है, फिर लगता है गलत ना हो। can't I? No, you can't. YouTube auto translation I don't. यूट्यूब का स्ट्रीम में देखा था, बट आई डोंट नो, लाइक मेरा स्ट्रीम में भी आने लगा, मे भी अपडेट हो गया क्या पता नहीं, बट सिंस आई वाज यूजिंग दी, आई स्पीक इन अंग्रेजी बोलता हूँ क्या, यू टाइप इन इंग्लिश इट्स। इधर क्या हो रहा है, बाइनरी बाइनरी अरे नम्स दे आर रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ones in the array. If you can flip if you can flip at one most zero, माने मेरा अरे ये दिया है, and if you flip the first zero, nums becomes, अच्छा you have to flip, समझ गया। मेरे को जीरोस को फ्लिप करने हैं वन से, and have to check how many consecutive ones I have. If it is bigger, then I have to return that number. If there जो मतलब बड़ा नंबर है उसको रिटर्न करना। पहले से बेटर है लग रहा है, मेरा पहले से बेटर लग रहा है। पहले भाई को टू समय भी पड़ जाता। तू क्या बोला था, ये क्वेश्चन क्या बोला था तू? ये क्या है, सबर ये प्रोडक्ट टेस्टिंग के, आई थिंक मैंने कर रखा है भाई। सबर समझे से ये थिंग किया है क्या मैंने, नहीं किया है, देखते हैं क्या है। Given an array integer nums and integer k, return the number of contiguous subarray where product of all elements in subarray strictly less than k. क्या ये मेरा 100 लेस देन 8 है? हाउ द फक इज इट लेस देन 8? आई मीन 100 से 8 बड़ा है क्या? कुछ भी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 सबअरे से मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबअरे जिसका निकालना है, जिसका मतलब सम मतलब प्रोडक्ट जिसका मतलब 100 हो रहा है। नाउ आई अंडरस्टूड। मेरे को टोटल कितने नंबर ऑफ सबअरे आ रहे हैं, जिसके मतलब के के इक्वल मेरे को आई मीन के से छोटा मेरे को मिल रहा है, तो उसमें से मेरे को काउंटर बढ़ा के चेक करना है। बाइनरी सर्च करने के लिए मेरे को सॉर्टिंग करना पड़ेगा, प्रीफिक्स सम। आई डोंट हैव द आइडिया प्रीफिक्स सम, मैन हैव टू लर्न दिस शिट। प्रीफिक्स सम के लिए प्रीफिक्स अरे बनता है। फर्स्ट प्रीफिक्स का वो कहाँ बता उसमें, हैव अ स्लाइडिंग विंडो करनी है। आई विल हैव एन विंडो, मेरा फर्स्ट विंडो बनाना पड़ेगा। व्हाट विल बी माय फर्स्ट विंडो देन? लेट मी क्रिएट अ फर्स्ट विंडो, लेट माय विंडो विल बी
window will be what? Should I keep it window product? Let me keep it window product. क्या मेरा zero into number will be okay twist था wonder कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेके स्टार्ट होगा and I will go till what KLN I plus plus will happen should it go till end of and let first window product the window product will be what will be my window product window product should be like nums of I guess अभी अपने को फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गया let total count will be 0 फर्स्ट प्रोडक्ट मिला कि नहीं चेक करते हैं भैया NN क्यों आ रहा है I'm getting NN this is wrong multiplied by this thing it should work right my product will be 1 if I 1 multiply into I less than k goes till k ah k is not a window I see this is not a fixed window this is variable length window वेरिएबल लेंथ विंडो कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे फिक्स विंडो नहीं है ये के क्या है के एक प्रोडक्ट है जिसका जिसका इक्वल मेरे को सब अरे निकालनी है तो दिस इज नॉट ए विंडो लेंथ मैं विंडो लेंथ समझ के विंडो लेंथ निकाल रहा था उसका सो 100 तक तो वैल्यू है ही नहीं तो आई एम गेटिंग एन एन विच इज फाइन इनफ आई गेस डीबगिंग भी फास्ट हो गया अब ब्रूट फोर्स से हुआ था बट आई एम नॉट एबल टू गेट ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स से तूने क्या क्या होगा 2 लूप लगाया होगा तूने एन स्क्वायर लगा क्या एन स्क्वायर के बिना तो हो ही नहीं सकता ये अगर ब्रूट फोर्स में किया तो वेरिएबल लेंथ के लिए क्या सेट निकाल सकते हैं अरे विंडो प्रोडक्ट रहेगा बस इसको 1 लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गेट काउंट विल बी 0 मैक्सिमम काउंट लिया था क्या मैं अब मेरे को लेफ्ट विंडो निकालनी है लेफ्ट 0 रहेगा कब तक जाएगा लेफ्ट राइट विल बी लाइक आई को 0 आई लेस देन माई राइट प्लस विल हैपन अभी यहाँ पे ट्विस्ट है भाई विंडो प्रोडक्ट ही ले लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट ही ले फ्रॉड लेगा इतना टाइप नहीं करते प्रोडक्ट कैसे लेंगे प्रोडक्ट में नम्स ऑफ राइट रहेगा अब क्या करें जब तक मेरा प्रोडक्ट है इक्वल्स टू के तब तक ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे प्रोडक्ट माइनस करना है क्या माइनस लेफ्ट करनी है लेफ्ट प्लस प्लस ताकि ग्रेटर देन हुआ तो निकल जाएगा बाहर होगा अब मेरे को काउंट चाहिए काउंट कहाँ निकलेगा काउंट किसका काउंट प्लस होगा मेरा राइट है लेफ्ट है
यार वेरिएबल लेंथ का एक फॉर्मूला जैसा चलता है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, राइट लेफ्ट माइनस राइट प्लस वन, ऐसा कुछ। सिंस जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब तक मेरा के का इक्वल है देन प्रोडक्ट विल बी। भाई मैं सब उधर से ये सब सीखा हूँ भाई, ये वेरिएबल लेंथ वाला ये सब। तेरे को जावा आता है, तेरे को वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट आता है तेरे को, जावास्क्रिप्ट आता है तो कर लेगा तू। क्या बोल रहा है ये, लेट माई राइट इज जीरो, व्हाट इज रॉन्ग हियर, आई, आई कहाँ तक जाएगा, नम्स लेंथ तक जाएगा, एंड ये आई नहीं राइट है। जावास्क्रिप्ट आता है ना, मैं तेरे को रिसर्च शेयर करूँगा, तो बस उसको फॉलो कर भाई, हो जाएगा। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट -24 आ रहा भाई, माइनस भाई, गेटिंग -24, इंटरेस्टिंग। जब तक मेरा राइट, सॉरी, जब तक मेरा प्रोड ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो मतलब जब तक मेरा ये है, शुडंट बी लेस देन, ओके, जब तक मेरा ये है तब तक डिवाइड करो, सॉरी। टीएलई आ गया भाई, सॉल्यूशन तो काम कर रहा, बट टीएलई आ गया। टीएलई क्यों आया, टीएलई क्यों आया ये तो ढूंढना पड़ेगा। टीएलई कैसे आ रहा है, टीएलई में प्रोड में प्रोडक्ट है, काउंट यहाँ पे है, लेफ्ट यहाँ पे है, लेफ्ट विल बी दिस साइड पॉइंटर, राइट विल बी माई दिस साइड पॉइंटर, राइट शुड गो टिल एंड ऑफ द अरे, राइट प्लस प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, प्रोडक्ट अगर के से बड़ा है तो डिवाइड। ओ, नम्स ऑफ लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन इज करेक्ट। ये क्या हो गया, अच्छा, इफ मैं, अगर क्या, अगर मेरा के लेस देन इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या होगा, लेस देन जीरो नहीं, अगर लेस देन वन है तो फिर मतलब फर्स्ट केस रहेगा ना, सिंस यहाँ पे के ज़ीरो है तो मतलब उसमें कुछ आएगा ही नहीं। हो गया भाई, ये इस वही है, फाइंड सबरे सम, ये वही है, इक्वल टू के है, सेम डिक्टो है। भाई आ क्यों नहीं रहा ये, मैं सबमिट किया था भाई। हाँ ये नहीं है भाई, वो किधर गया, लॉन्गेस्ट सब भरे, अच्छा लॉन्गेस्ट सब भरे, अरे दूसरा अकाउंट है अच्छा मैं इस इनके अकाउंट में कर दिया क्या, बता, मेरे को लगा मेरा अकाउंट में कर रहा था, बोला था मेरा अकाउंट है। ये देख मैं बताता हूँ, बात सिंपल है। क्या था वो, मैक्सिमम सब भरे सम भाई, तो चाहिए तो मिनिमम है ये, मिनिमम में मैंने ऑप्टिमाइज वाला नहीं किया था। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भाई, 53 डेज, 53 डेज स्टार्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, लॉन्गेस्ट सबरे, सम, बड़े, 'सब' है, 'सब' किधर गया, 'सब' किधर है, 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 'सब' किधर
मेरे को ये दिखा भी नहीं रहा, मैंने कर रखा भाई, मेरे को याद है भाई, क्या कर तो रखा है मैंने। ये देख, पहला सम बना, फर्स्ट विंडो यहाँ पे बना। किधर गया फर्स्ट विंडो? अच्छा ये रहा, फर्स्ट विंडो बना। फर्स्ट विंडो बनने के बाद में, और ये दूसरा अप्रोच है, यही मेरा अप्रोच था। पहला सम लिया, फिर काउंट लिया, फिर फर्स्ट विंडो बनाया, फिर उसमें से वो प्लस किया, फिर अगर सम कहीं खोला तो काउंट बढ़ाया, फिर काउंट रिटर्न किया। ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है। जब तक मेरा ये, जब बड़ा हो जाएगा डिवाइड करते रहिए, डिवाइड करना है, फिर इसको लेफ्ट प्लस प्लस करना है एंड काउंट। ये वाला लॉजिक मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, बट ये शायद जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये हम लोग ऐसे लेते हैं इसको। इसको 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 तेरा ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन दिखा। ब्रूट फोर्स तो कर ले रहा, तो मतलब ये भी कर लेगा भाई। देख, लेफ्ट मेरा स्टार्टिंग विंडो था, बताया तेरे को, राइट मेरा लास्ट विंडो था। प्रोडक्ट बना रहे थे, कितना टोटल वैलिड था। आगे ना तुम जरा, आता है ना। चिकन राइस नहीं फिर नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ये देख, ये वाला मेरे को समझ नहीं आता, बट मैंने इसको मतलब याद रखा है कि जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं भी कर सकता हूँ। पहले क्या करता था, लेफ्ट राइट करता हूँ, फिर माइनस करता हूँ। पहले राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन करता हूँ। इफ दिस दैट डजंट वर्क देन आई पुट राइट माइनस लेफ्ट माइनस प्लस वन। ये काम कर जाता है। क्या बोल रहा है, करंट विंडो इज वैलिड, लेफ्ट रहेगा, फिर राइट का सारे चीज़ें, तो ऑल सब वेरी एंडिंग इन द राइट आर वैलिड सच दैट विंडो लेंथ विल बी राइट। अच्छा, करंट करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट का एंड प्लस वन समझा। इसको माइनस करने से विंडो लेंथ आ जाएगा अपने पास, तो वही तो देना है अपने को। वैलिड वैलिड विंडो रहेगा तो वैलिड विंडो का काउंट तो हम निकाल ही रहेगा, तो ये जितना भी वैलिड विंडो रहेगा उसका काउंट इधर आ जाएगा। और लोगों ने कैसे किया है इसका, तो और अप्रोच है ही नहीं भाई, यही है। ये क्या जे जे डे क्या है, जे कहाँ से है इसका? अच्छा इसने इसका जे, अच्छा इसने दो, अच्छा इसने दो पॉइंटर बनाए, क्या है ये? ओह, यू कैन इवन डू लाइक दिस। एक वाइल लूप से कर सकते हैं, दो वाइल लूप लगे हैं इसके। जब तक मेरा जे इसमें है, अच्छा जब तक मेरा जे इसमें है तब तक प्रोडक्ट बना, उसके बाद ये करो, इससे अच्छा मैं फॉर लूप दूँ। मैं तेरे को रिसोर्स शेयर करूंगा बाद में, थोड़ा देर में शेयर करता हूँ। वो देखना तो एक बार, समझ में आ रहा कि नहीं देखना, वो अच्छा समझाता बंदा। मेरे को स्लाइडिंग विंडो पैटर्न करने का है। ये देख, सिंपल बताया है। फिक्स्ड विंडो रहेगा ना, फिक्स्ड विंडो में हमेशा तेरे को, फिक्स्ड विंडो में हमेशा तेरे को पहला पहला का हमेशा तेरे को बनाना पड़ता है एक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट विंडो बनाना पड़ता है हमेशा, तभी तो उसमें से सबट्रैक्ट करेगा लेफ्ट विंडो।
तो ये तो साइज कंपैरिजन है जो बता था विंडो का साइज है। अगर ये है तभी ये सब विंडो में से लेफ्ट रिमूव कर रहे हैं। अगर वैलिड वो विंडो नहीं है तो वी विल रिमूव इट फ्रॉम द लेफ्ट। रिमूव करने के लिए क्या है, अरे ऑफ लेफ्ट में इंडेक्स रहेगा लेफ्ट का, सिंस वी आर यूजिंग लेफ्ट एज इंडेक्स। तो उसको रिमूव करेगा, माइनस इक्वल करेगा तो निकाल देगा, उसको निकाल के फेंक देगा। उसके बाद अगला इंडेक्स जा रहा है ताकि बाकी जो भी एलिमेंट्स है उसमें चला जाए। ये फिक्स्ड का हमेशा यही टेम्पलेट होता है, ऐसे ही चलता है, हमेशा ऐसे ही चलता है। बट वेरिएबल में ऐसा होता है थोड़ा बहुत। वेरिएबल में क्या होता है कि लेंथ ऐसे वगैरह लेगा एंड फिर कुछ कंडीशंस रहते हैं उसमें, फिर काउंट वगैरह रिटर्न करना पड़ता है, फिर सब अरे में रिटर्न करना पड़ता है। अगर तेरे को सब अरे पूछता तो कैसे रिटर्न करता, तो सब अरे रिटर्न करने के लिए यहाँ पे एक रिजल्ट अरे बनाता है एंड उसमें से क्या करता है, यहाँ पे ऐसा करता है। प्रोडक्शन का इधर बन रहा है, प्रोडक्शन यहाँ पे अपना ये बन रहा है। तो यहाँ पे तो रिजल्ट में पुश कर देता है उधर, प्रोडक्ट तो नहीं पुश करता, नम्स ऑफ राइट को पुश करता है। ये क्या होगा, ऐसा हाँ ऐसा कुछ करना है, तभी सब बड़े बनेगा। नम्स ऑफ राइट करेगा तो सारे सब बड़े जो भी हैं सारे पुश हो जाएंगे, बट ये वैलिड नहीं रहेंगे सिंस वी आर चेकिंग फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इसके बाद पुश करेगा तो यू विल गेट अ वैलिड सबको, ऐसा ही होता है। स्लाइडिंग विंडो का यही पैटर्न होता है। एंड और एक होता है वेरिएबल का, थोड़ा लोचा होता है थोड़ा बहुत इधर उधर। जो हम लोग किया था वो वेरिएबल था, वाइल आता उसमें, हमेशा वाइल आएगा, तो हमेशा वाइल आता। यहाँ पे अपडेट करेगा लास्ट में, और यहाँ पे जो भी एक्सपैंड या कुछ करना है, ये श्रिंकिंग का लॉजिक यहाँ पे आता है। ये बोलना खाना पड़ा है, ये बोलना खाना पड़ा है कंफर्म। ఇది రైస్ బాగా हाँ सारा पड़ा है। ఏ ఎండు అయినారికి ఈ కై नहीं ఉంటారు इतना ना सारा నాకు రైసా कंफर्म ஹலோ ஹலோ ரைஸ் நமக்கு ரைஸ் இத்தினுண்டு தான் இருக்கு அதுல கூட சொல்றேன். நான் சாப்பிட மாட்டேன் அவ்வளோ நைட்டில் சாப்பாடுலாம் ஏன் சாப்பிடுவேன், ரொட்டியே செய்வீங்க, டீ எல்லாத்தையும் எனக்கு ஊற்றிட்டீங்க। मैं तेरे को शेयर करता हूँ भाई, थोड़ा देर में शेयर करता हूँ। स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? 59 मिनट्स हुआ है क्या, मतलब फक भाई इतना देर से कर रहा था। अच्छा 1 आवर 59 मिनट्स हुआ है, वही तो लग रहा था। वही 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 शेयर कर रहा हूँ। और शेयर दिस किधर गया रे तू? किधर गया भाई? तो और मैसेज कर एक बार, मिल गया। ये इसमें ज्वाइन कर लेना भाई, इसमें ज्वाइन करके डीएसए सेक्शन होगा अलग से। ईएच नहीं रे, ईएच में क्यों गया? ईएच नहीं जाना था तेरे को।
डीएसए में आया, डीएसए में आया, डीएसए में मिलेगा, सारा कुछ है इसमें। ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा वो टॉपिक निकाल के देख लियो। मैं इधर से सीखा हूँ, बी ऑनेस्ट। वरना फिर वहाँ पे तेरे को फॉरवर्ड फ्रॉम आ रहा है ना, फॉरवर्ड फ्रॉम में से, फॉरवर्ड फ्रॉम में से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेगा तो उधर भी मिल जाएगा तेरे को, क्लीन एकदम। ये मेरा था ये वाला, लाइक कंप्लीट ही मेरा चाहिए। आई मीन ईएस में ज्वाइन नहीं किया क्या? ईएस तो खत्म भाई, ईएस तो है ही नहीं, ईएस डीएसए का शेयर किया था ना। ना ब्रो, you have different ways of learning for free, you don't have to pay. When you're able to get it for free, then you don't have to pay for it. बस सीखो। चलता हूँ फिर, हाँ जाता हूँ, थोड़ा सा खाना खा के थोड़ा सा क्यूब वगैरह करूँगा, फिर छोड़ा गेम भी बनाना, तो उसमें से फॉलो करके देखते रहना बस। मिल गया ना तेरे को? हाँ सही है, फिर चलता हूँ फिर, हाँ उसमें से देख देख के सब पढ़ ले, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसको डिलीट मार रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्ट्रीम पे दिख ना जाता, फिर मेरा लग गया। ज्वाइन कर लिया ना तू? फिर तो ठीक ही है। बस डीएसए वाला खुला होगा, डीएसए वाला में ही सब कुछ मिल जाता है वो। वरना फिर तू एक काम कर, तू फॉरवर्ड करना है तो कर ले फॉरवर्ड वगैरह, फिर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके ऑफलाइन में रख ले। इसका गारंटी नहीं है कब निकल जाएगा ये सब। डिलीट तो नहीं होगा सिंस ओनर ने मतलब निकल गया कुछ। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। गुड लक विद डीएसए ना, अगला बार आएंगे तो डीएसए करिए, ठीक है। बस पढ़ते रहो और क्या, तेरा पास टाइम बहुत है अभी, तू क्या करना, तू सबको डाउनलोड करके रख ले, फोल्डर फोल्डर बना के रखना भाई, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सारा कुछ। आई थिंक यू हैव मोर देन 50 GB plus content, I guess. You can download them on YouTube, okay? मैं ऐसे ही नाम बदल के बोल रहा था, ये चूतिया समझना भाई, ठीक है, तू समझ जाए। व्हाट्सएप में डाउनलोड कर लेना भाई, डाउनलोड करके फोल्डर बना के रख लेना सबको, ठीक है। 50 GB ऊपर में सारी चीज़ें, किसी को बताना मत, ओके? डोंट डोंट गिव द लिंक टू एनीवन एल्स। पर्सनल था मेरा, पर्सनल पर्सनल मेरा खुद का था वो। अगर अगर तू फॉरवर्ड कर पा रहा है क्या, तू एक बार देख लेना, फॉरवर्ड कर पा रहा है तो फॉरवर्ड कर लेना, वरना फिर इसी में से देखते रहना, कोई टेंशन नहीं, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। बाकी सब टॉपिक शायद बंद, तेरे को एक्सेस नहीं होंगे, डीएस से एक्सेस होगा आई गेस। ठीक है भाई, चलता हूँ भाई, गुड नाइट ब्रो। दफा 150 मेंबर्स, अच्छा उधर, हाँ पुरान उनके उसमें 150 मेंबर्स है, कंपटीशन है ब्रो, एवरीवेयर कंपटीशन है, पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं, सेम थिंग।
मेरे को T1 के बाद में क्या सब करना वो देखना है। कि मैं जाता हूँ खाना खा के मैं काम करता हूँ खाना खा के नहीं यार वैसे भी टाइम होगा। बाय बाय।